Come on, my dear students, let us start our lesson, The Call of Mountains. In this lesson, you will read about the courageous adventures of Pashandri Pal, Santosh Yadav, first of all, Edmund Hillary from New Zealand, Tonjing Norway, and Edmund Hillary, Tenzing Norway were, and Edmund Hillary both were the first group of people who reached on the highest peak of the mountain. Before this, 118 people died trying, and more than 574 people have stood there, and 118 have died trying. 574 people were tried their level best, but could not succeed to reach on the highest top of mountain. Understood? 118 were died trying to reach the highest peak of mountain. Do you understand? So come to the point. Let us, whatever writers has given us materials, we have to read it. Read about a young girl also set out on a life of adventure, because she says the mountains called her, and how were two have not been scared by the challenge of the mountains. Read about a young girl, एक छोटी सी लड़की, एक उत्साही लड़की कहानी पढ़ो, who set out on a life of adventure, जो साहसिक कारनामे के यात्रा पर निकल पड़ी. Set out is a phrase, my dear. Sanvi, I told you, set out is a phrase. It means यात्रा पर निकलना, रवाना होना. I have already written for you. Do you know what is the meaning of set out? यात्रा पर निकलना, चलना. It means that it is a phrase, and all phrasal words must be remembered, must be learnt with their meanings. Then you can use it in your sentences also. When you have to write English paragraph, when you have to write English letters, you have to use phrases. That will be good for you. Understood, my dear? Nearly 60 years after Sir Edmund Hillary, Tenzing Norway became the first man to conquer Mount Everest on May 29, 1953. This is a great question, When and who and when Mount Everest were conquered by Edmund Hillary and Tenzing Norway. Understood? On 29th May 1953. Did you understand? You have to learn it, my dear. 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा. यह पक्का रखने वाले पहले दो व्यक्ति थे. देयर हैज़ बीन ए स्टीडी स्ट्रीम ऑफ पीपल टेकिंग टू द हिमालयाज. और उसके बाद जो है बहुत स्थिर, स्टीडी मैंने स्थिर, स्ट्रीम मैंने झरना, स्ट्रीम बहुत ही धीरे से, बहुत जब उसके बाद जो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, इसका झरना झरझर का बहती है. और मैनी पीपल हैव ट्राइड टू रिपीट द हिस्ट्री which was created by Edmund Hillary and Tenzing Norway. Many people tried to repeat the history, but a steady stream of people taking to the Himalayas. स्थिर धीरे धीरे, बहुत कम लोग को हिम्मत होती थी कि हम पहाड़ पर चढ़ने का सोच भी सकें. काहे तो बहुत जान को खतरा था. देयर वाज ए डेंजर, इट इज ए डेंजरस वर्क. इफ यू हैव टू climb mountain, you have to use your rope, and there is a knot on every step. You have to use that rope, and you have to use 5 fingers, like what you can say, a net like thing, and you have to tie it into your rope, and you have to move it round and round, and you have to
throw it. It will catch, it will stuck, it will hold any bigger, part of mountain, bigger part of stones, bigger part of rocks. You have to use it. You have to try whether it is caught or not, caught properly or not. When you are confirmed that my rope has been caught by any strong rocks, strong parts of mountain, then you start running, climbing. One step, two step, there is a knot, and you have to use in this way. You have to use in this way, and between two fingers, and you have to go on the top of the mountain in this way. This is the risky one. If that very mountain slip down, you will fall down on the earth and you will die. If there will be a poisonous snake, you are climbing, there is no protection at all. Any poisonous snake will bite you. Then you have to protect yourself. And there is no oxygen. When you go higher and higher, there is lesser oxygen. And there is a place in the space where there is no oxygen at all. Because as you know that oxygens are created, oxygens are being manufactured by the plants, by the trees. Oxygens have been supplied since very long time, since the world has been started, since the existence of living beings, human beings and living beings came on this earth. Only sources of oxygens are trees and plants. And there is no trees, there are no trees, there are no plants into the space. So there is no air into the space. I think 1,000 kilometers to 2,000 kilometers. 2,000 meters perhaps. You have to find out. After 2,000 meters, there will be no air at all. If you will fall on the air, you will not, come onto the ground directly. It will take time. Understood? Where there is no oxygen, where there is no air, suppose, who was the first man to land on the moon? Who was the first Indian to land on the moon, Captain Rakesh Sharma in 1984. He was the first Indian who landed on the moon. Am I right? Captain Rakesh Sharma was the first Indian who landed on the moon. And if you are 35 kg on the earth, you will be only 5 kg on the moon. If you jump from your spacecraft, and you will not fall down on the earth directly. Your body is just like a dry leaf. A dry leaf fell from the tree, and it doesn't go directly to the earth. It moves here and there. Nafis Khan, am I right? It moves here and there. After 2 or 3 minutes, 4 or 5 minutes, it will come down on the earth. Where air pushes it, it goes in that way. Suppose a dry leaf fell from the tree. It doesn't go directly because there is no weight. It is weightless, almost weightless. So it doesn't go directly on the earth. It takes time, 2 minutes, 3 minutes. And where air pushes it, it goes in that very direction. Like this way. When we go into the space, there is no oxygen available in the space, and our weight is completely, our weight is 90 kg on India, on the earth, then it will be only 25 to 30 kg. No, very simple. Panchma hissa, fifth, 20% weight is counted into the space on the moon where there is no oxygen. Come to the point, I was telling you so many descriptions about the, space and, solar system and atmosphere. Nearly 60 years after Sir Edmund Hillary and Darling Norway became the first being conquered in Mount Everest on May 29, 1953. 60 साल पहले 1953 में, आज से 60 साल पहले हुआ 1953 में सर एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे दोनों मिलकर के माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा.
देयर हैज़ बीन ए स्टडी स्ट्रीम ऑफ पीपुल टेकिंग टू द हिमालयाज। और उसके बाद जो है लोग धीरे धीरे हिमालय की ओर जाने लगे। और अनटिल तेंजिंग स्केल्ड द एवरेज इट हैड डिफीटेड ऑल द चैलेंजेस। लेकिन तेंजिंग ने Tenzing was Indian. I would like to repeat it. Tenzing scaled the Everest and it had defeated all the challenges. Defeated all the challenges. सारी चुनौतियों को परास्त कर दिया। किसने? तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने। और माप लिया उस दूरी को, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर जाने का। सिंस देन 574 पीपल हैव स्टूड देयर। 574 लोग उस कतार में खड़े हुए जो माउंटेनियर बने, जिन्होंने इच्छा व्यक्त की मुझे पहाड़ पर चढ़ना है। एंड 118 हैव डाइड ट्राइंग। और उनमें से 118 मर गए ऐसा प्रयास करते हुए। बट द चैलेंज ऑफ एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, रिमेन्स एंड मेनी ऑफ द ग्रेट माउंटेनियर्स हैव बीन इंडियंस। लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो चैलेंज है वो बरकरार रहा। बहुत सारे भारतीय जो है इस कारनामा को कर दिखाए। तो भारत के बगल में ही है नेपाल, और नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में, भारत में नहीं है। भारत में हिमालय की शाखा है, उसको हम कंचनजंगा कहते हैं। यहाँ काराकोरम टू सबसे ऊंची है 5500 मीटर। कंचनजंगा, गौरी, ये सब भारत की ऊंची शिवालिक हिमालय का। और सारी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में ऐसे करके फैला हुआ है पहाड़, है ना। भारत में भी है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ इसमें भी। But the challenges of Everest highest peak in the world remains, and many of the great mountaineers have been Indians. बहुत सारे जो great mountaineers हुए वो भारतीय हुए। It was in 1984 that Bachendri Pal became a pioneer of the first woman to scale the Everest. और उसको जो सानवी लिखी थी वर्ड मीनिंग SCALE लिखी थी, SCARE लिखी थी। कॉपी निकालो, चेक करो। SCARE स्केयर, दैट मीन्स भयभीत होना। स्केल में यहाँ दूरी मापना। तो 1984 में पुनः पहली भारतीय महिला बनी बछेंद्री पाल, जो उन्होंने ही कहा था कि मैं पहाड़ मुझे बुला रहा है। मैं भाई उसको रोकता था, डांटता था, पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश मत करो। उसका भाई सुनते हैं कि एक तो भाई उसने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश में जान भी गंवा दिया था। लेकिन फिर भी बछेंद्री पाल ने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी और माउंटेनियर वाला ग्रुप को ज्वाइन कर लिया 1984 में। बिकेम द पायनियर, पायनियर अग्रगण्य, इसको सबसे पहले हम गिनते हैं। पायनियर नहीं, आज भी रोड नहीं है। पहाड़ पर रोड है तो बहुत ही कठिनाई से रोड है, बहुत ही ढाल है, उसमें गाड़ी को एक्सीडेंट का बहुत खतरा होता है। जो गाड़ी मिस करती है वो उसकी जान ही चली जाती है। इट इज़ डेंजरस टू वॉक, इट इज डेंजरस टू ट्रैवल इन माउंटेन एरिया। इट इज डेंजरस टू ट्रैवल इन माउंटेन एरिया। Come to the point. So I was telling you, my dear, Bachendri Pal conquered Mount Everest in 1984. She was the first lady, she was the first woman of India who did this, adventure. And since then, the news of women conquering the peak has been heard again and again. नॉट ओनली बछेंद्री पाल, उसके बाद से और सारी महिलाओं की कहानी सुनी जाने लगी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। संतोष यादव डिड सो ट्विस इन 1 ईयर। एक बार संतोष यादव ने एक साल में 2 बार ऐसा कारनामा कर दिया। संतोष यादव ने एक साल में 2 बार ऐसा कारनामा कर दिया। वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। संतोष वाज बोर्न इन जोनियावास ए स्मॉल विलेज इन हरियाणा। उसकी कहानी सुनो आप, संतोष यादव की। बछेंद्री पाल के बारे में जाने आप, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के बारे में जाने, द फर्स्ट पीपल हु कन्क्वेर्ड द माउंट एवरेस्ट। अब आप जानने जा रहे हैं संतोष यादव के बारे में। संतोष यादव वाज बोर्न इन जोनियावास ए स्मॉल विलेज इन हरियाणा एंड सॉ ए माउंटेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1986। और पहली बार उन्होंने 1986 में माउंटेन को देखा। द माउंटेन्स फैसिनेटेड हर, पहाड़ ने उसको प्रभावित कर दिया। फैसिनेटेड माना आकर्षित कर दिया।
मन को लुभा दिया, fascinated her. But she was the only girl child with 5 brothers and nobody encouraged her. वह जो है एकमात्र बेटी थी अपने पिता की और उसके 5 भाई थे, किसी ने उसको इनकरेज नहीं किया, हिम्मत नहीं बढ़ाया, साहस नहीं बढ़ाया, उसका हौसला अफजाई नहीं किया. She almost ran away from home to join the mountaineering इंस्टीट्यूट. वह घर से भाग करके माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन की. विदिन 6 years on May 2, 1992 when she first unfurled the tricolor atop एवरेस्ट. और 2 मई 1992 को वो जो है पहली बार जो है ये 2 मई 1969 को 6 साल के बाद 2 मई 1992 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया. अनफर्ड झंडा फहराना दिखाई दे आपको. She had joined the select band of 15 women who have scaled the highest peak in the world. और पूरे दुनिया में आज तक 15 महिला जो है माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ी है. उसमें से भारत की 2, बछेंद्री पाल और संतोष यादव जो 1 साल में 2 बार चढ़ गए. इसने कारनामा कर दिया. वोमेन वीमन का, तो उसको वोमेन को आजकल वीमन पढ़ाया था, तो वीमेंस कॉलेज होता है ना, WOMAN को वीमन पढ़ी, वुमन बहुत लोग वुमन भी कहते हैं. तो शी इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड. हम लोग वोमेन ही कहने की आदत है, वीमन होना चाहिए. She was the first and the only woman in the world to have scaled Mount Everest several times, including 2 successive climbs in less than 1 year. एक साल से कम में भी 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ने का कारनामा संतोष यादव ने ही पूरे दुनिया में किया. उसने कठिनाई भरी रास्ते पर चढ़ना 1 साल में 2 बार संतोष यादव ने ही किया. For those, so in this way you find that Santosh Yadav was one of the courageous ladies, one of the motivational thing for all of us who dared to climb on the top of the mountain 2 times. She was also a girl. You people are also girls. Imagine yourself. Why don't you be a pilot? Why don't you be the Mount Everest conqueror? Why don't you be an army and whatever you want to be, you can be. You may be, because Santosh Yadav has given you a burning example. A girl can do it. Why don't you? If Santosh Yadav can do it, why don't you? You think like this, then your self-confidence will be increased higher and higher. Am I right? Okay, thank you.